Assalamu alaikum students, how are you? Now we have studied our first chapter and it was very interesting. We talked about parts of the plant and we talked about animals and we talked about the food chain, right? Which is very interesting, and then we also talked about food web. So now we will be doing some questions and answers related to this chapter, and remember we will discuss these questions and answers now, and then when your teacher will call you or she will ask you to send this work directly to her. Okay, so you need to write the answers to these questions neatly in your copy and then send this work to your teacher, and then your teacher might be discussing this with you. So our first question is, what part of the brain controls balance and coordination of the body? So you can go back to your lesson. It is on page number 4. So what part of your brain controls your balance and coordination? So on your brain you have this thing listed, and you need to show this part, draw this part and show it to your teacher, that which part of your brain balance controls your balance and coordination. What is the function of the trachea? So what is trachea and what is the purpose? So trachea is that pipe that takes, oops, I'm not supposed to tell you this, so you tell me, what is trachea? So trachea is a what? Yes, a pipe like thing which goes from our nose and it goes in, right, and then it goes to our lungs. So air goes through trachea and goes in and then goes to our lungs. This is trachea here, right? This pipe here is trachea. See how it goes from the nose in and reaches these two lungs. So this is how air goes into our body. Question number 3 is, which is the longest bone in human body? Which is the longest bone in human body? So where you will find the answer to this question? Well, of course, in the bones part, right, where we are talking about bones, there you will find the answer to this question. It's on page number 7. Okay, so well, I should not tell you this. You will find the answer to this question, okay, which is the longest bone on our body in the skeleton. You see this note, which is the longest? Which is the longest? Well, it is given in the passage. In that passage at the end, you will read that which is the longest bone, and it starts with F. F, okay? The name of that bone. Now, question number 4 is very interesting. This is where you need to draw the following food chain, right? So we have rice, rat, owl, nuts, squirrel, hawk, grass, grasshopper, frog, snake, eagle, decayed plants, worm, bird and eagle. So you need to draw a picture on which you will show rice growing like this here, and nuts on the ground, and grass, and then you will show some dead plants, and then you will show that all these things, rice is eaten by a rat, right, and nuts are eaten by a squirrel, and grass is eaten by a grasshopper, and dead plants, decayed plants, they are eaten by worms. Then you need to show what comes next, like it's given in this question. So rice is eaten by rat and rat is eaten by an owl, and nuts are eaten by squirrel and squirrel is eaten by a hawk, right? So you need to draw this diagram. Try to draw it on a big chart paper,
right? So it looks neat, and then hang it in your room or in your home somewhere so everyone can see. So we understand, ताकि हमें ये बात समझ में आए कि हर एक जानवर, हर चीज़ जो है ना, उसकी वैल्यू होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ईगल्स और बर्ड्स कितनी अच्छी लगती हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ईगल्स हों और बर्ड्स हों, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन पे वर्म्स हों. ठीक है, तो वर्म्स जो हैं वो होंगे तो बर्ड ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो बर्ड की फूड है. हम में से बाज़ लोग जो होते हैं ना, उनको ये अर्थवर्म, केचुए अच्छे नहीं लगते, हम उनको मार देते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तरफ तो वो सॉइल को हेल्थी करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनको चिड़ियाँ खाती हैं, ईगल्स खाते हैं, तो आपने उनको मारना नहीं है ना. तो वो वर्म ज़रूरी है. अच्छा, वर्म क्या खाते हैं? वर्म खाते हैं ये ड्राई ग्रास और जो डेड ग्रास होती है ना, डिकेड, वो होती है. अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ लोग उसको आग लगा देते हैं. उसको आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उन डेड लीव्स को वर्म्स भी खाते हैं, कीड़े भी खाते हैं, जिनको फिर बर्ड्स खाती हैं. और उन्हीं को जब वो डेड होती जाती है ना, डिकम्पोज जिसको कहते हैं, डेड डिकम्पोज, वो ज़मीन में जाते हैं, तो दे मेक फूड फॉर आवर अर्थ. वो फर्टिलाइज़र बनती है हमारी सॉइल में. और दूसरी तरफ अगर हम उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है एयर में, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो ये आपने फूड चेन्स बनानी है. नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इज़ to think about this. What new did you learn this in this chapter? I'm sure जो चीज़ आपने नई इसमें सीखी है, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं ना. One is the function of our brain, right? अगर मैं पीछे देखूं तो function of our brain is very interesting. और ये पिक्चर जो है function of our brains की, पेज नंबर 4 पे, ये है भी बड़ी इंटरेस्टिंग. इसमें कलरफुल है और इसमें सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं. सो आई एम श्योर दिस इज़ समथिंग न्यू. हार्ट का भी नया हो सकता है ना, कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट के पार्ट्स ऑन पेज नंबर 5. पेज नंबर 7 पे जो बोन्स के बारे में, शोल्डर ब्लेड एंड रिब केज एंड बैक बोन, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी, दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और मसल्स के हाउ ऑन पेज नंबर 8, how bones are covered by muscles, right? अगर bones ना हो तो हम बिल्कुल एक गोश्त, डेड मीट की तरह पड़े हों, और अगर मसल्स ना हो तो हम मूव ही ना कर सकें, क्योंकि ये जो मूवमेंट हम करते हैं ये हमारे मसल्स करते हैं. तो दैट इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन. Well, you learned on page number 9 about common diseases and their causes, कि कॉमन हमारी डिजीज़ क्या हैं और वो क्यों होती हैं. दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट. देन दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन एनिमल्स, कि इंफॉर्मेशन एनिमल्स में कैसे प्रोसेस होती है, वो कैसे सोचते हैं और कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उनके सेंसेस कैसे काम करते हैं. ये एक तरह का ऐसे है यहाँ पे, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपने नया सीखा. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट इज़ द फूड वेब, राइट? कि फूड वेब के अल्लाह ताला ने किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ लोगों की और जानवरों की और पौधों की खुराक बनाया है, और किस तरह सब लोग जो ज़मीन पर रहते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना. मज़े की बात है. एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव विच वी, अच्छा, आपने ये लिस्ट करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें नई सीखी हैं. बहुत सारी चीज़ें नई हैं. आप 3 लिस्ट कर दीजिए कि मैंने ये नया सीखा. आपने जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, वॉट एवर यू लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई लाइक दैट आई लर्नड इन दिस चैप्टर. नंबर 1 इज़ दिस, नंबर 2 इज़ दिस, नंबर 3 इज़ दिस. एंड देन थिंक अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर humans destroying food chains? Now this is a very important question. तो जो आपने फूड चेन अभी ड्रॉ की थी ना पूरी की पूरी, जब हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस किया था, तो अब आप उसको गौर से देखना शुरू करें कि हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट फूड चेन. हम कैसे उसको डैमेज कर रहे हैं, कैसे उसको तबाह कर रहे हैं, किस किस जगह पे हम किस किस चीज़ को मार रहे हैं उस फूड चेन में. तो यू गोइंग टू लिस्ट दैट कि
बिल्कुल नीचे लेवल पे जो ग्रासेस हैं हम उसको यूं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फ्रॉग, स्नेक और ईगल को हम यूं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या हमारे कौन से एक्शन, हम कौन सा पोल्यूशन फैला रहे हैं, क्या काम करते हैं, हंटिंग करते हैं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर किस्म की काम तो उससे कौन सी चीज़ मर रही है, हम कैसे फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यू गोइंग टू लिस्ट स्टेप्स 1 2 3 4, इस सेक्शन से हम ये कर रहे हैं, इस सेक्शन से हम ये कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर टास्क, यू नीड टू राइट दिस डाउन एंड देन यू विल कम इन कॉन्टैक्ट विद योर टीचर एंड यू नीड टू गिव हर ऑल दीज डिटेल्स। वो आपसे ये सारी बातें पूछेंगी जो आज हमने डिस्कस की हैं, आपने इन सब के उनको जवाब देने हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।